Assalamu alaikum ladies and gentlemen, welcome back. As you guys know, English language course का आज हमारा 4th डे है और इसकी जो सब कैटेगरी है स्पीकिंग, आज इसका फर्स्ट डे है. So, when I was planning about the lectures of speaking category, जो सबसे पहली चीज़ मेरे माइंड में आई थी वो ये थी कि सबसे पहले हमें जो चीज़ डिस्कस करनी चाहिए इट शुड बी साउंड्स. कि साउंड्स इन इंग्लिश में कौन कौन से साउंड्स हैं, उन्हें कैसे प्रोनाउंस करना है. ठीक है, क्योंकि हमारे साथ मसला ये है कि हमारे स्कूल्स में क्या किया जाता है कि हमें लेटर्स तो बता दिए जाते हैं कि ये 26 लेटर्स हैं, इन्हें आपने याद कर लेना है, रट लेना है, लेकिन उनके जो साउंड्स हैं वो हमें नहीं बताए जाते, जिसकी वजह से हमें स्पीकिंग में प्रॉब्लम होती है. ठीक है, सो स्पीकिंग को ठीक करने के लिए सबसे पहला जो हमारा फोकस होना चाहिए इट शुड बी ऑन साउंड्स. तो हमारे पास इंग्लिश में 44 साउंड्स हैं. बेसिकली इसमें कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस भी हैं, कुछ लोग कहते हैं ज़्यादा हैं, कुछ कहते हैं कम हैं, लेकिन 44 आर द स्टैंडर्ड. अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो 44 साउंड्स हैं इनकी बेसिकली डिवीजन किस तरह से की गई है. ठीक है, तो आप सबको पता है कि हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं, राइट. 26 लेटर्स में से 5 वावल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं. अब जो 5 वावल्स होते हैं उनके 19 वावल साउंड्स होते हैं. ठीक है, 5 वावल्स कितने साउंड्स बनाते हैं? 19 वावल साउंड्स. उनकी कुछ सब डिवीजन्स हैं. ठीक है, जैसे 6 शॉर्ट वावल साउंड्स, 6 लॉन्ग वावल साउंड्स, 5 आर कंट्रोल्ड वावल साउंड्स, 2 डिप्थोंग्स वावल साउंड्स. ठीक है, और जो 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो हमारे पास 25 कॉन्सोनेंट साउंड्स बनाते हैं. इसमें से जो 18 है वो तो सिंपली कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, और जो हमारे पास बाकी 7 बचते हैं वो हमारे पास डायग्राफ्स हैं. अब हमने ये देख लिया कि इनकी डिवीजन कैसे हुई है. तो अब हमने क्या करना है कि स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन इन सब को देखना है. इनकी जो कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज हैं, किस तरह से प्रोनाउंस करना है. तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ सजेस्ट करूँगी. आपने क्या करना है कि मैं जो भी बोलूँ आपने उसे सुनना है, और सुनने के बाद बोलना लाजमी है. ठीक है, लिसन देन स्पीक, क्योंकि सिर्फ सुनने से आप कभी भी ये चीज़ मास्टर नहीं कर सकते. तो आपने सुनने के बाद उसकी स्पीकिंग प्रैक्टिस लाजमी करनी है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हमारे पास जो है 6 वॉवल, जो हमारे पास शॉर्ट साउंड्स हैं, हम उन्हें देखते हैं. सबसे पहला हमारे पास है ए. ए, एप्पल, फैट. सेकेंड वन इज ए. ए, elephant, bed. The next one is E. E, win, miss. Next one is O. O, pop, lock. Next one is A. A, blood, suck. Next one is O. O, book, pull. ठीक है, ये हमारे पास शॉर्ट वॉवल साउंड्स थे. अब हम देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी को, विच इज़ लॉन्ग वॉवल साउंड्स. ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट वन इज ए. ए, प्ले, से. नेक्स्ट इज ई. ई, ट्री, बी. नेक्स्ट इज आई. आई, टाइम, हाइड. Okay, so next one is O. O, road, couch. The next one is U. U, unicorn, cute. Next one is Oo. Oo, shoe, food. Okay, अब हम अपनी next category को देखते हैं. Now let's look at 5 R controlled vowel sounds. So the very first one is R. R, star, art. Next one is or. Born, torn. Next one is R. Bird, Thursday. R. Next one is air. Scare, chair. Next one is ear. Clear, near. Okay,
So now let's look at the next category. It's two diphthongs vowel sounds. Diphthongs basically क्या होते हैं, दो vowel sounds को मिलाने से बनते हैं, ठीक है. So the very first one is oi, oi, joy, annoy, soil. Okay. Next one is ow, ow, cloud, mouse. Fine. So now let's look at the consonants. So the very first one is ba, ba, bad, mob. Next is da, da, ride, loud. Next is family, cliff. Next is ga, ga, gate, girl. Next is home, hard. Next is ja, ja, jar, jump. So the next is kha, kha, kite, keep. Next is lips, mole. Fine. Next is welcome, monkey. Fine. Next is nail, mine. Fine. Next one is pa, pa, pin, pool. Fine. Next one is arrow, rat. Fine. So the next one is sun, snake. Next is ta, ta, 2, 3. Next is wet, view. Next is web, watch. Next is ya, yogurt, your. Next is zebra, music. Now let's move to the next category, which is diagraph. Diagraph basically क्या होते हैं, दो letters मिलके एक नया sound बनाते हैं. So the very first one is shade, she. Next is cha, charm, cheese. Next is whale, when. Next is strong, tongue. Fine. Next is measure, closure. Fine. So the next one is tha, think, with. Fine. Next is da, them, do, da. फाइन, दैट्स इट फॉर टुडे. ये हमारे पास 44 साउंड्स थे जिनको आज हमने थोरोली देखा है. आई होप कि आप इनकी प्रैक्टिस लाजमी करेंगे. इनकी जितनी हो सके प्रैक्टिस करें. प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन अंटिल यू मास्टर इट. ठीक है. सो वे मैंने आपको बताया, पहले सुने और फिर उसे बोलें, जितनी चाहे मर्जी दफ़ा बोलें. ठीक है. लेकिन इस चीज़ को मास्टर लाजमी करें अगर आप एक अच्छा एक्सेंट बनाना चाहते हैं अपने इंग्लिश का और एक अच्छे वे में इंग्लिश को बोलना चाहते हैं जो उसका बोलने का सही हक भी है, सही तरीका भी है. फाइन. सो आज के इस लेक्चर को यहीं कंक्लूड करते हैं. कमेंट बॉक्स में ये लाजमी बताइएगा कि आपको सबसे डिफ़िकल्ट साउंड कौन सा लगा है. फाइन. सो मिलते हैं कल के लेक्चर में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.